I think my screen is visible. Yes. Okay. तो आज हम स्पेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि लाइक व्हाट इज स्पेसिस इन द डेटा स्फेयर। तो स्पेसिस की हमें जरूरत क्यों पड़ी और इसने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, ये हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझते हैं। मान लो एक कंपनी है जिसमें दो डिपार्टमेंट्स है, एक एचआर का है और एक सेल्स का है। ठीक है, एचआर अपना जो डेटा मेंटेन कर रहा है वो किसी पेरोल सिस्टम पे मेंटेन कर रहा है और सेल्स अपना डेटा किसी सीआरएम सिस्टम पे मेंटेन कर रहा है। तो इससे क्या प्रॉब्लम हुई कि दोनों डिपार्टमेंट्स अपना डेटा अलग अलग डेटा सोर्सेज पे मेंटेन कर रहे हैं, तो उनके बीच जो तो डेटा शेयरिंग और कोलैबोरेशंस में दिक्कत आने लगी। ठीक है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि सब डिपार्टमेंट्स के डेटा को एक सेंट्रल हब पे इंटीग्रेट कर लिया जाए। तो इससे क्या होगा कि डिपार्टमेंट्स को इजी एक्सेस मिल जाएगा रियल टाइम डेटा और एनालिटिक्स के। तो इसके बाद भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि अगर डेटा एक जगह इंटीग्रेट होगा तो उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, या मान लो एचआर के पास कोई एम्प्लॉय सैलरी डेटा है या फिर एम्प्लॉय की कोई पर्सनल डेटा है, तो वो ये इंश्योर करेगा कि उसका जो डेटा है वो सिर्फ रेलिवेंट मेंबर्स ही एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्पेसिस का। तो देखते हैं स्पेसिस क्या करता है। स्पेसिस हमें एक सिक्योर एरिया प्रोवाइड कर देता है और आइसोलेशंस ऑफ डेटा का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है, जिससे हर डिपार्टमेंट का डेटा सिक्योर रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा अदर डिपार्टमेंट से। तो कोई और डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। सब डिपार्टमेंट्स अलग अलग अपने एरिया में अपना काम कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ईच अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो एसएपी को हम कह सकते हैं एसएपी इज लाइक अ स्मॉल डेटा वेयरहाउस फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस सेगमेंट। ठीक है, और दे आर द वर्चुअल वर्क एनवायरमेंट्स विद देयर own work and with their own data settings, or you can say that with their own database storage or configuration. A space is a secure area that an administrator creates. In it, members can acquire, prepare, and model data. The administrator allocates disk storage and in-memory storage to the space, sets its priority, and can limit how much memory and how many threads its statement can consume. It means it provides the isolations for the metadata objects and the space resources. Administrator control how much data each space can store, can also limit how much processing power each space can use to avoid the overloading the system, and can also define which task gets priority within the each space to ensure the important tasks are completed first. If the administrator appoints space administrator, they can add more members, set up connections to the data sources, secure data, and manage the other space details, which means they can manage who can do what within the specific space. They can assign different roles and permission to each members. For example, if there are secure rooms in the building where different teams can work without the interfering each other, each space has its own data and resources that are kept isolated from the other spaces. I think it is clear to all. Going to the tool, on the left hand side, we can see the option of the space management. Everything is possible in Datasphere only if you have the access to that space. Okay, in the trial version, we don't have the option to create the space, but currently this one space is created for us. And whichever space you have access, all those spaces can be seen here. And again, only the administrator can create space and give access to you. Okay. So if we go to the edit mode, we can see the configuration. First, here are the general settings created by, created on. All this information available here. Important point in this space management is of user assignment. If administrator want to provide this space access to someone, that administrator has to add that particular user information under this user assignment.
Uh, in the style version, we can't do this, but in the SAP Datasphere, the administrator add the user information if he wants to provide the access to this specific space. Okay, the next thing here is connection. If we click on the connections, then here are two type of connections, local connections and SAP open connectors. Okay, we will see this in the connection session. Coming back to the space management, here we have the time data. So what is time data? Like SAP provides some timetables. We can see the timetables from the data builder option. Okay, so here you can see some timetable options like translation table month. Coming back to the space management, the last option under the space management is the auditing. So if you want to track any changes happening in the table and all, and if you want to have logs, then we can enable this. But if we capture the logs, then it is going to consume too much space because it is a cloud space. So when we need it, then only we go for this one. So this is all about the space management.